Good evening, students. I hope you all are doing fine. अब पेपर ऑलमोस्ट आ ही गया है. Many of you have requested, काफी लोगों ने मुझे मेल किया और कमेंट सेक्शन में भी बोला कि अधिकतर लोग 2023 का डिस्कस करते हैं. Why not discuss 2024 का CSAT का एक पेपर? So I have uploaded 2023 का reading comprehension already on my channel. Today we will discuss 2024 का CSAT का reading comprehension के क्वेश्चन. कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इजीली कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं. Before starting the session, मैं आपसे I want to discuss four key tips या cheat code that you should remember. First is almost every time extreme statements are wrong. Extreme statement जैसे जिसमें ultimately, solely ऐसे words दिए जाते हैं, those are mostly wrong. Second, positive, balanced statement are often correct. Third, you should be stick to the passage. Stick to the passage. जो एक्स्ट्रा आया है उस पर फोकस नहीं करना. Whatever is asked in the passage, answer should be passage से relevant. Okay. Fourth, don't infer what is not asked. पैसेज में जो पूछा नहीं है बट वो लॉजिकली करेक्ट हो सकता है, दैट विल नॉट बी द आंसर. जो पैराग्राफ में पैसेज में पूछा गया है, आंसर वुड बी रिलेटेड टू दैट ओनली. आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे. सेट ए सी सेट. पैसेज 1. According to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of food produced for human consumption is lost or wasted globally. This passage is related to food wastage. Food is lost or wasted throughout the supply chain from initial government production to final household consumption. The increasing wastage also results in land degradation by about 45%. Food wastage से land degradation होता है, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practice and excessive groundwater extraction. जब हम फूड वेस्ट कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ऑल, तो लैंड डिग्रेडेशन भी होता है. द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर. यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन इज ऑल्सो हैपनिंग. डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. Addressing the loss and wastage of food in all its form is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. Yani, at the end of the passage, the author is saying कि we need to take action. ये action के ऊपर this is saying. Let's solve the question. First, which of the following statement best reflect the most logical and rational inference from the passage? I will tell you one more thing. कि अधिकतर पैसेज में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इन्फ्रेंस, अजम्पशन एंड ऑल. डोंट फोकस ऑन दैट. उससे ज्यादा जो मैंने आपको फोर टिप्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, फोकस ऑन दैट कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर ऑफन करेक्ट. द स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट शुड बी फ्रॉम द पैसेज. एंड फोर्थ, डोंट इन्फर फ्रॉम योर साइड. डोंट थिंक कि व्हाट इज नॉट आस्क्ड इन द पैसेज बट वो लॉजिकली करेक्ट है, वो करेक्ट होगा. दैट इज नॉट ट्रू. जो चीज लॉजिकली करेक्ट है बट इट इज नॉट इन द पैसेज, दैट विल नॉट बी करेक्ट. जो लॉजिकली करेक्ट है बट वो पैसेज में नहीं पूछा, वो करेक्ट नहीं होगा. रिमेंबर इट. फर्स्ट, द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड. सोलली रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज. लैंड प्रोडक्टिविटी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है. दिस इज फ्रॉम द पैसेज. दिस इज करेक्ट. देन थर्ड, reduction in the loss and wastage of food results in less carbon emission. अगर हम वेस्टेज का रिडक्शन लेस करेंगे तो लेस कार्बन एमिशन होगा. दिस इज ऑल्सो इन द पैसेज. कार्बन एमिशन की डायरेक्टली बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज करेक्ट. देन फोर्थ, फूड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड डैमेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल. दिस इज नॉट इन पैरा. ठीक है, दिस इज नॉट आस्क्ड. आंसर इज बी, 2 and 3. नेक्स्ट, second, based on the above passage, the following assumption have been made. First, the food distribution mechanism need to be reimagined and made effective to reduce food wastage. Then second, ensuring reduction in of food wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizens. This will be correct. First will be correct.
एंड सेकंड इज आल्सो करेक्ट. फर्स्ट करेक्ट क्यों है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड. ये लास्ट वाले पैरा की ऑल दीज 3 लाइंस यही बोल रही है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है और इंश्योरिंग रिड्यूसिंग वेस्टेज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी है. पैसेज के स्टार्टिंग में इज आल्सो सेइंग कि हमारा जो पूरी साइकिल है वो फूड वेस्टेज हो रही है फ्रॉम सप्लाई चेन. तो दिस सप्लाई चेन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस इज फ्रॉम दिस, एंड सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम लास्ट लाइन ऑफ द पैरा. So this is from, both lines are from paragraph. Answer is C, both 1 and 2. Next, passage 2. As inflation rises, even the governments previously committed to budget discipline are spending freely to help household. Inflation यानी high rise in demand. यानी जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं आर राइजिंग, देयर इज राइज ऑफ प्राइसेस, तो गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है. गवर्नमेंट ट्राई टू गिव मोर मनी टू द पीपल सो दैट दे कैन बाय गुड्स. तो गवर्नमेंट ट्राई करती है ज्यादा लोगों के पास पैसा जाए जिससे वो ज्यादा जो प्राइस राइज हो रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे. हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर सपोज्ड टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट व्हाइल पेइंग मोर टू बोरो गवर्नमेंट मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस. आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा देता है जिससे देयर इज लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन क्यों होता है, देयर इज मोर सप्लाई इन द इकोनॉमी. आरबीआई इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट so that there is less supply of money in the economy, but और simultaneously government को भी taxes बढ़ा देने चाहिए या फिर spending कम करनी चाहिए. aim is to reduce money supply. तो both RBI monetary policy control करती है और government control fiscal policy. तो government को भी अपना वो इसमें balance होना चाहिए. there should be a balance. आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करे और टैक्सेस रेज करे टू रिड्यूस द मनी सप्लाई. ठीक है, बट आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है. बट गवर्नमेंट जो होती है वो अपना पॉपुलिज्म की वजह से गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, तो पब्लिक डिमांड होती है टू सॉल्व द सिचुएशन. लोगों के पास मनी नहीं है टू बाय द गुड्स, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करने की बजाय गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर. तो वो जो आरबीआई का हाई इंटरेस्ट रेट का जो एम होता है वो नलीफाई हो जाता है, वो वर्क नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है. दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. बोथ आरबीआई एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट गवर्नमेंट इज गोइंग इन अनदर डायरेक्शन एंड आरबीआई इज गोइंग इन अनदर डायरेक्शन. तो यही पैसेज बोल रहा है, विदाउट फिस्कल बैकअप द मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन. यानी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के मॉनेटरी पॉलिसी वोंट वर्क. हाई इंटरेस्ट रेट बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिस्फ्लेशनरी बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट. गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी. द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन द पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट. यानी दिस पैसेज इज अबाउट बैलेंसिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. क्वेश्चन थर्ड, which of the following statement best reflect the most logical and rational inference that can be made from the passage? First, central banks cannot bring down inflation without budgetary backing. This is correct. मैंने बताया था कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, विदाउट उसके वर्क नहीं करेगा. ये पैसेज में भी क्लियरली मेंशन्ड है, बैकिंग चाहिए होती है. without fiscal backup monetary policy eventually loses traction. This is from this line. Then second, the effects of monetary policy depend on fiscal policy pursued by the government. Similarly, same meaning. अलग अलग वे में बोला गया. Answer would be C, both 1 and 2. Next, based on the above passage, the following assumption have been made. First, fiscal policy of government are solely responsible for high prices. Extreme statement. और इसमें causes भी नहीं दिए गए, तो this is also not in the passage कि what are the reason for high prices. गवर्नमेंट के अलावा और भी हो सकते हैं. सेकंड, higher prices do not affect the long term government want. नहीं, जो पब्लिक डेट है वो सब इम्पैक्ट करता है. दिस इज इम्पैक्टेड. डू नॉट नहीं होना चाहिए था, नॉट नहीं होना चाहिए था, डू इफेक्ट होना चाहिए था. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. आंसर वुड बी डी, neither 1 nor 2. आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. Today, if we consider cities such as New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because planning carrying a heavy system approach were imposed on their precincts. यानी urban planning की बात हो रही है. This passage is about urban planning cities के लिए. The backbone of the system theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirable into mathematical models using computing, statistics,
optimization and algorithmic way of formulating and solving problem, यानी multi-dimensional approach, multi-dimensional planning. The early universities of the West, which began to train professional in planning, spawned, यानी give rise to some of the most ingenious planner who were expert in this domain. यानी जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है उन्होंने काफी अच्छे प्लानर्स का वो करा है. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its root in social sciences, geography, architecture. ये भी multi dimensional planning वेस्टर्न में curriculum है. Planning in India and its education differ from the West. यानी इंडिया की प्लानिंग सिस्टम और वेस्टर्न का एजुकेशन इज डिफरेंट. वेस्टर्न का थोड़ा ज्यादा एडवांस है, इसलिए दे आर डूइंग बेटर. क्वेश्चन 11. Which one of the following statement best reflect the logical rational inference? First, curriculum for urban planning courses should have diverse and interdisciplinary approach. This is correct. Diverse ये हमने पढ़ा है, पैसेज में ये दे रखा है, ऊपर भी this is given in the passage, mathematical model and all. So this is in the passage, directly from passage. Second, in India, city administration is under bureaucracy which lack formal training. This is not in passage, unnecessary. Third, in India, the management of urban areas is a local affair with a chronic problem of insufficient fund. Again, not in passage. Fourth, with high density of population and widespread poverty in our urban areas, planning development in them is very difficult. Again, this thing is not in passage. And what is not asked in passage, don't infer from your side. Don't overthink. Stick to what is asked in the passage. Then question number 12. Based on the above passage, the following assumptions have been made. First, India needs a new generation of urban professional with knowledge relevant to modern practices. ये डायरेक्टली assumption है लास्ट वाले पैरा से कि प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट. प्लस इसमें भी है कि अर्ली यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट ने इंजीनियस डोमेन करें, तो डायरेक्टली भी ये बोलना चाहता है पैसेज ऑथर कि इंडिया में भी ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है. तो दिस इज कंपेयरिंग इंडिया और वेस्ट का. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम अप्रोच. दिस इज रॉन्ग. ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. नो कैपेसिटी, एक्सट्रीम मतलब ये टू एक्सट्रीम है, तो दिस कांट बी करेक्ट. Option 1 A would be correct. Then next, not every voice on the internet commands the same kind of audience. यानी इंटरनेट पे there is exclusion. When anonymous private entities with high capital can pay for more space, यानी जो ज्यादा पे करेगा उसके पास more space होगी, जो कम पे करेगा उसके पास less space. तो जो social media internet है, that is exclusionary. They are effectively buying a louder voice. If potential discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till election is won, then the quality of politics suffer. यानी सोशल मीडिया पे काफी येलो पेज जर्नलिज्म होती है, सेंसेशनलिज्म होता है, पेड न्यूज जो पॉलिटिशियंस दे एंगेज इन पेड न्यूज, तो इसकी वजह से पेड न्यूज की वजह से उनको ज्यादा स्पेस मिलता है कुछ पॉलिटिशियन को. तो दिस बिकॉज ऑफ दिस आवर डेमोक्रेसी सफर्स. द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द promotion of content that generate more engagement regardless of how inflammatory the content is. Yani they are focused on more profit. Social responsibility nahi hai media ki. Which one of the following statement best reflect the central idea of the above passage? First, constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access to information. This is correct. This leads to misinformation, not information. Second, social media are not ideal or moral institution, but the products built by companies to make profits. This para is saying promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory this is. This is correct statement. Third, social media have been created to strengthen democracy. No, polity suffers. This is given in the passage. Quality of polity suffers. This is wrong. Opposite. In today's world, social media are inevitable for well-informed. Inevitable, misinformed ज्यादा कर रहा है. And this is given in the passage. This is fake news वगैरह की वजह से misinformed ज्यादा हो रहा है. Next, based on the above passage, the following assumption have been made. First, internet is not inclusive enough. हमने ये पढ़ा है इस पैराग्राफ में. Not every voice on the internet commands same kind of audience. Not inclusive. Directly from passage. This is correct. Second,
The internet can adversely affect the quality of politics in the country. This is also directly from the polity suffers. This is given. So both 1 and 2 are correct. I hope ये समझ आ गया होगा. Next, question number 21. By the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age range 13 years to 15 years. But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading, simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic. यानी poor quality of education की बात है. Every year, about 25 million young boys and girls from elementary school move into a life that lies beyond for them beyond compulsory schooling. मतलब they grow schooling के बाद क्या what they would do क्योंकि schooling में they messed up their education future. They cannot enter the workforce at least in the organized sector क्योंकि they don't have the proper skill and knowledge till they are 18 plus they are minor, so इसलिए they can't enter the workforce. For many, these children are the first from their families ever to get this far in the school. Parents and children expect that such graduates from school will go to high school and college. Expectation होती है after getting good education in primary and secondary, they would go to colleges and all. Hardly anyone wants to go back to agriculture. Unproductive है, so people don't want to go. On the other hand, abilities in terms of academic competency are far lower than they should have been based on curricular expectation. यानी उनकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 8th क्लास में that people should know इतना बेसिक मैथमेटिक्स एंड वो उस एकेडमिक एबिलिटी उससे लोअर है, बिलो द एक्सपेक्टेशन है. आई होप ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. बेस्ड ऑन द above assumption, the following above passage following assumption have been made. For effective school education, parents have greater role than government. Not in passage. इसकी बात ही नहीं है. Second, school curriculum that conforms to today's requirement and is uniform for entire country may address the issue throughout. This is too extreme. तमिलनाडु का सिस्टम अलग होगा, केरला का सिस्टम अलग होगा. फॉर एग्जांपल केरला में सर्विस सेक्टर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहां का एजुकेशन वुड बी गियर टुवर्ड्स दैट सेक्टर. तमिलनाडु हैज मैन्युफैक्चरिंग मोर, तो एजुकेशन सिस्टम वुड बी अकॉर्डिंगली. तो आंसर वुड बी डी, neither 1 nor 2. Then question number 22. Which of the following statement best reflect the central idea conveyed by the passage? Total eradication of poverty in the country will solve the issue of underperformance of our education. Eradication, not in passage. Not in para. Then second, monetary incentive to parents and teachers is a strategy to improve children academic performance. Monetary incentive. Again, this is not in para. Unnecessary. Third, public policy should ensure that competencies and achievement of young people are aligned with expectation. This is directly academic competency or expectation should be aligned. This is from para. Then next, India is not going to take advantage of demographic dividend unless some school pass out go to educate go back to agriculture. This is wrong, unnecessary. This is a wrong statement. वो तो मना ही कर रहा है. Passage is saying कि people don't want to go to agriculture because it is unproductive. Passage 2. We take it for granted now that science has social responsibility. This passage is about science, social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. Science का relation social responsibility और truth के साथ बताया. This passage is about. The idea that science is a social enterprise is a modern, and it begins at the Industrial Revolution. जो modern idea की science has social responsibility started in Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended the Golden Age. हम मानते थे कि Golden Age end हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने गोल्डन एज एंड कर दिया, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पॉजिटिव थिंक क्या करी कि साइंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन बढ़ा दिया, विच डिड नॉट एग्जिस्ट बैक. तो हम उस गोल्डन एज में देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस. 21. Which one of the following statement best reflect the thinking of the author about the science? Science must value the commitment of scientists, not in para. Unnecessarily infer नहीं करना what is not asked. Don't infer what is not asked. This is not in the passage. Second, science is a product of civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness of the people. This is not in passage.
Third, industrial revolution was made possible by the advancement in science. This is wrong, ऐसा नहीं है, this is not in para. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंस की बढ़ेगी ऑफ साइंस इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इसमें क्वेश्चन द पैराग्राफ इज नॉट सेइंग कि बिकॉज ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड, बट इट इज सेइंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंस के बारे में अवेयरनेस हुई. देन फोर्थ, साइंस मस्ट परस्यू द ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. मैंने बताया था, इसमें पैराग्राफ हमने पढ़ा था साइंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रुथ के ऊपर. All these three are in this statement. Option D would be correct. Next, question number 31. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. Yani isme question is about history of science and history of mankind. These are together interlinked. Like most epigram, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relation between science and mankind. We often overlook the relation and to treat the former as some abstract third party, which can sometimes be praised for its beneficial influence. Science की बात हो रही है, but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. यानी sometimes according to our whims, अपनी मर्जी से हम साइंस को कभी प्रेस करते हैं, साइंस को कभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. ये सारी जो वॉर हुए हैं वो सिर्फ साइंस की वजह से हुए हैं, which is not right thing. Conveniently. Science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience, cannot be divorced. Yet, we have seen that in spite of countless opportunity of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of the progress of science, or does the fault lie elsewhere? So, a question mark here. 31. Which of the following is are empathetically conveyed by the author of the passage? First, without science, mankind could not have continued to exist till date. This is wrong, extreme. Could not have continued. Second, it is science that will ultimately determine the destiny of mankind. The passage about relation between mankind and science. The question is not about science will ultimately determine the destiny. This is question mark. This is too extreme. Answer is D, neither one nor two. Then 32. Based on the above passage, the following assumption have been made. First, the horrors of modern science are the inevitable result of the progress of science. नहीं, this is this is very factual statement. But इधर क्या है? Passage is saying conveniently we blame. This is question mark. This is doubtful. We wrongly blame science for the horror. But inevitable result, this is factual. This is a wrong statement. I hope you समझ आया होगा. Next, the aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made of it. This is correct. Man's convenience, because of man's convenience, science हम अपनी तरह से, this statement is from this, because of man's convenience is science is what man has made of it. क्योंकि हम अपनी तरफ से साइंस को कभी ब्लेम करते हैं, sometimes we sometimes give it all the credit. Answer is 2. Next, passage 2. Only with long experience and opening of his wear on many a beaches where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Parochial means local. This is about travel passage. Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere. यानी सब मतलब this paragraph saying कि if traveler is traveling to other area, ये जो कुछ common qualities होती हैं हर जगह, justice, love and honor, भले ही there is difference of language and all, are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled. यानी ये चीजों को सब जगह there are common values, but उन values की meaning अलग अलग होते हैं, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel. यानी common values के बारे में learn करना चाहिए जो foreign जाते हैं, to those who wish to live at ease among their fellows. यानी you have to learn if you have to live with them. 33. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding, communities and nationalities, local values and universal values, friend and foes. Answer would be C, local values.
and universal value. This is given in the paragraph. This is directly from here. Then question number 34. With reference to the above passage, the following assumption have been made. First, travel leads to understanding of humans. The first शुरू की lines are understanding of humans. Where merchant come to know. ठीक है, this is understanding. This is correct. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. These fundamental common values are also from the passage. This is correct. These are directly from the passage. Third, a person with long experience in travel can resolve difference among people. नहीं, ये understand करते हैं. Difference वाली चीज नहीं है. This is wrong. Cannot solve. This is wrong. Answer A, 1 and 2. Next, question number 41. Conventional classroom, by emphasizing fixed duration over learning effectiveness, resign themselves to variable outcome. यानी conventional classroom focuses on only fixed duration, not learning outcome. ठीक है, this is rigid, तो इसकी वजह से outcomes are not good. The tyranny of classroom is that every learner is subjected to same set of lecture in the same way for the same duration. In the end, a few learners shine, some survive, and the rest, yani most of the people are left behind. After the fixed duration, the classroom model moves on with not a thought spared for those who are left behind. But some are achievers and most of them are left behind. Left behind as what? Unemployed youth. This is how we end up with 10% unemployability in our graduates after a decade and half of formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results. Now we are focusing on skill education, but skill education is also messed up like a college or school education. So because skill education is to increase the employment. Employment increase हो, इस वजह से skill education दी जाती है. But जैसी situation skill education की qualities मतलब that bad कि शायद से भी unemployment होगी. 41. Which of the following statement best reflect the most logical and rational inference पूछा है. First, in conventional classroom learning, the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. This is correct. This is directly from first line. Second, conventional classroom encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation. This is correct. This is from again paragraph. Same set of lectures, same way for the same duration. Answer is C, both 1 and 2. Next, 42. Based on the above passage, the following assumption has been made. As a large number of workers in our country are employed in organized sector, India does not need to change its present conventional education system in education. This is wrong. We need to change. Ineffectual script अगर हम करते रहे तो this will be wrong. This is wrong. मतलब this is opposite of what is in the passage. Second, even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realizing the benefit of demographic dividend. Author is talking about negative. Again, this is opposite to what is asked. Sufficient number नहीं है, इसलिए स्किल एजुकेशन कर रहे हैं, पर हमें लग रहा है कि इनफिक्चुअल स्क्रिप्ट भी स्किल एजुकेशन में चल रही है. This is both, neither 1 or 2. When a child reaches adolescence, there is apt to be conflict between the parents and child. यानी when children reaches adolescent, teenage year में, तो conflict होता है naturally parents and child में. Since the latter consider himself to be now quite capable of managing his own affairs, children want to manage their own affair, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love for power. Parents want to dominate. तो conflict होता है. Children want liberty, freedom, parents want to dominate. तो ये conflict चलता है. Parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province. The options they express, however, are so dogmatic. Parents are dogmatic, conservative, that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret. Yani children are not able to tell their parents. 43. Based on the above passage, following assumption have been made. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. We read it, this is correct. Second, the adolescent of modern time does not have much respect for parents, does not have much respect. Not in passage. Not ये paragraph में है नहीं. The paragraph is nowhere telling कि there is no respect. Answer will be A, 1 only. Paragraph is saying there is conflict of opinion, but the paragraph does not say at all there is do not have much respect. So be specific. I told you, don't infer from your side what is asked in the passage. You should stick to that only. जो passage में पूछा है उतना ही सोचना है, overthink नहीं करना.
44. Which one of the following statement best reflect the central idea of the above passage? First, parent in a general way, hint दे दी, may not be of much help when children are on their way to becoming adults. हाँ, दिस इज करेक्ट, मतलब पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, डोमिनेटिंग होते हैं. बस दिस इज रिटन ना कि द ऑप्शन दे एक्सप्रेस आर सो डॉगमेटिक दैट चिल्ड्रन डोंट confide in them. So this is correct. When children reach adolescent, involvement of parents in their life is unnecessary. This is extreme. Modern day nuclear families are not capable of bringing up children. Not asked in passage. In modern society, adolescents tend to be stubborn, disobedient, and careless. This is too extreme. It's the opposite. Passage में ये कुछ बोला ही नहीं, बस passage में बोला children have their own way of doing things. Then let's do next paragraph. Passage 1, question number 51. When an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rock, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved the rock, calcium and magnesium and formed limestone. Carbon dioxide का basically carbon dioxide is converted into stone, exclaimed scientist. ये rational and practical suggestion क्या है? Answer is B. This can be used as one of the method of carbon sequestration. This is very basic. We all have read in अपना उसमें GS के पेपर में कि this is one way of carbon sequestration. Environment से वो लेना है, कार्बन लेना है, उसको लाइमस्टोन में कन्वर्ट कर देना है, जिससे वो सीक्वेस्टर हो जाए. कार्बन जो एनवायरमेंट से वो निकल के लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाए. देन पैसेज 2. Geographers have analyzed 150 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, and found that giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in southern ocean. यानी आइसबर्ग जो भी मेल्ट हो रहे हैं वो इतना ज्यादा कार्बन अपने में स्टोर करते हैं. If it melts, तो there would be rise of carbon dioxide. The researcher discovered that melting water from iceberg, which contain iron and other nutrients, iceberg में कार्बन भी होता है, उसके अलावा आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, that support hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton. यानी बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को भी सपोर्ट करता है, तो इससे फिशेस की ग्रोथ ज्यादा होगी क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन फिशेस फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन. तो इसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग की वजह से नेगेटिव ये ग्लोबल वार्मिंग भी, बट पॉजिटिव ये है मेल्टिंग ग्लेशियर आइसबर्ग में आयरन एंड अदर थिंग्स होती हैं जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होगी फिशेस की. दिस इज द पैसेज. Based on the above passage, the following assumption have been made. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and the food chain of South Ocean. This is directly melting ocean. उसमें iron nutrients होते हैं, तो उसकी food cycle phytoplankton are primary productivity के source. This is directly from passage. Then second, melting of iceberg can produce climate change effect and impact world fisheries. जैसे कि मैंने बताया कि काफी सारा कार्बन होता है और therefore affect and impact world fishery. World fishery ग्रो हो जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लाइमेट चेंज भी इंक्रीज होगा, पर वर्ल्ड फिशरीज भी, फिशरी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होगी, क्योंकि आइसबर्ग में आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स है. आई होप ये समझ आएगा. दिस इज करेक्ट. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. देन क्वेश्चन 53. Evolution has endowed caterpillar that feed on corn with a unique ability. They can induce a plant to turn off its defense against insect predators. एंड इसके पास कैपेबिलिटी होती है प्रेडेटर से बचने की, प्लांट्स को बचाने की. This helps caterpillar to eat more and grow fast. The agent that causes this effect is the caterpillar feces or frass. The find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogens like fungi and bacteria. First, इसमें logical practical message क्या है? First, farmers use caterpillar to feed on wheat in their crop yield. Then second, this find can help in development of clinically useful antimicrobial compound. Third, this finding can help in the development of organic ecologically sustainable pesticide. ये फोर्थ पैरा की कंपाउंड एसोसिएटेड विद द प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस और ये बैक्टीरिया जितने ये होते हैं. फोर्थ, कैटरपिलर कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड. जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है, तो दिस इज अ रिस्की. इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस तो मैं ये स्किप करता क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वीट, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड, जीएम की बात की गई है. दिस इज नॉट इन द पैराग्राफ, तो यू कैन स्किप दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 61. In a robust democracy, reality, however inconvenient it may be, finds its expression both in speech of leaders and other social forms of assertion. यानी reality बाहर आई जाती है. The existence of the real has to be transparent both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy.
यानी मीडिया की बात की है, दिस इज अबाउट मीडिया. A normatively responsible media, through its communication effect, has a responsibility to circulate the content of reality without distortion. These are keywords. यानी इसमें मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रक्स क्या है पैसेज का? फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडल डेमोक्रेसी. दिस इज डायरेक्टली, मतलब इसकी लाइंस डायरेक्टली कॉपी पेस्ट पैराफ्रेज करके कर दी. दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी वी डोंट नीड टू रीड इट, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम पैसेज. Then passage 2. Nowadays, there is a growing trend to use interconnected home devices as consumer increasingly network their home. जैसे AC वगैरह में सब sensors are attached. The connected home device manufacturer and service provider will seek to overcome thin profit margin. यानी manufacturers sell their product at very less profit so that more consumers can buy. By gathering more of our personal data, but in return what they get, profit कम मिल रहा है manufacturers को, but in return they get a private personal data, and data is the new oil. With or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketeers will have powerful incentive to observe consumer behavior to understand the buying needs and preference of device owner. तो उस data से they can market our products to us. Practical message क्या है? Knowledge of consumer behavior leads to capital expenditure. This is not in passage, not asked. Second, knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade, thus help in overall. This is not the crux. Crux is about personal data, privacy. कि जो जितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी पर्सनल डेटा को ले रहे हैं और उसको फिर उस अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. Interconnected devices give a lot of comfort to home users and improve overall quality of life. This is not in passage. ये भी क्रक्स नहीं है पैसेज का. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स. इफ यू अंडरस्टैंड द क्रक्स यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. व्हेन यू रीड द पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो पैसेज पढ़ने के बाद साइड से प्लीज राइट इट व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज. इफ यू हैव टू गिव द टाइटल टू द पैसेज तो आप क्या टाइटल दोगे? दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ, interconnected devices can be at security risk and home buyers may have privacy risk. This is general, this is main crux. Answer is D. Next, green growth involves rethinking growth strategy with regard to the impacts on environmental sustainability. We need to rethink our growth, sustainable growth, and the environmental resource available to the poor and vulnerable. In rethinking growth, we need to focus on the current reality of resource constrained world. There is less resources we are consuming fast. Resource intensive and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resourceful frugal development strategy if we are to avoid an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of an ocean of poverty. आई होप समझ आ गया होगा. क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में की गई है. क्लाइमेट चेंज की वजह से इनइक्वालिटी इतनी आ रही है, उसके बारे में. व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी is inimical to our objective of achieving high rate of GDP growth. This is not in the passage. कि हाई रेट ग्रोथ की वजह से वो हम ये नहीं कर पा रहे, इनिमिकल हो रही है हमारी जीडीपी ग्रोथ. दिस इज नॉट करेक्ट. पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल without a rapid economic growth and the consequent environmental degradation. This is मतलब extreme opposite. Environmental degradation के बाद भी poverty eradication possible है अगर वो sustainable तरह से economic growth हो. C, maintaining high environmental standard is now a prerequisite for achieving steady, sufficient and inclusive. इसमें उसकी बात कही गई ना, inequality की small in the midst of a sea of poverty. So this is correct. Positive and balanced statement. ठीक है. इसमें क्वेश्चन में लास्ट में सजेशन यही दे रहा है. फोर्थ, विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. यहां तक तो सही था. फिर इसमें लिखा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एंड इनइक्वालिटीज आर इनएविटेबल. दिस इज टू एक्सट्रीम. एंड इनइक्वालिटीज आर नॉट इनएविटेबल. ये क्वेश्चन ये इतना नेगेटिव पैसेज इज नॉट दैट दिस नेगेटिव. इनइक्वालिटीज भी हट सकती हैं. वी कैन कैंसिल इनइक्वालिटीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर हम पैसेज का ये सजेशन मांगे कि वी शुड मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स इंटेंसिव से हम इधर जाएं, रिसोर्स एफिशिएंट एंड फ्रूगल रिसोर्स डेवलपमेंट पे जाएं. दिस इज द सजेशन. दिस सजेशन इज गिवन इन पैसेज. Suggestion in para. So this is not inevitable.
Next, question number 71. Unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truth. Poetry is not about absolute truth. Poetry is about multiple ideas. Those forces or individual who claim to have absolute truth in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical. जो ट्रुथ का क्लेम करते हैं वो टिरानिकल हो जाते हैं. Truth usually does not admit any contradiction or imperfection. It is unitarian. Truth is always factual. It is therefore not of much use for poetry. Poetry abides by the plurality of life and existence. Poetry is about multiplicity of ideas, plurality. Perhaps poetry follows reality, which is plural, anachronistic, full of contradiction. Against the tyranny of truth, poetry remains a partisan of democratic reality. Yani poetry supports democratic reality against tyranny. So this is the crux. Against arrogance of power, wealth, and hierarchy, poetry presupposes both humility and defiance. Which one of the following statements best reflects logical, rational message? It is poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfection in humans. This is not in passage. Second, truth is revealed through science or religion, and poetry is anathema to truth. This poetry is anathema to truth. This is not in passage. Poetry favors truth, but it has multiple ideas. Third, poetry is romantic, imaginary, and is about feeling, whereas science and religion are about truth. This is wrong. This is not in paragraph. Not in para. Plus, this is not crux. Fourth, main message क्या है? Crux क्या है? In a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance. Poetry is about resistance. इधर दिया गया ना tyranny, dictatorial regime against the tyranny of truth. This is all related to this thing. This is from para. Crux from para. I hope you समझ आया होगा. Next, the flower was invented to please us. It flaunted its flower invent किया गया, natural नहीं बोला. It's flaunted its petal and spread its perfume to attract an insect. The insect carries the pollen from flower to flower so that pollen is not carried away by wind and does not wasted. तो बहुत strategically हमने ये करा है कि insects करें wastage कम हो. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and human invention. मतलब human ने nature में इतना intervene कर लिया है. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have conditioned to it. Passage पढ़ते हैं. Based on the above passage, the following assumption have been made. The author of the passage believes that flowers are creation of nature's luxury. This is wrong. This is human invention. Passage में directly दिखा है human, opposite है. Second, the author of the passage does not believe in the usefulness of flower except thing of beauty. This is wrong. इधर usefulness की बात की गई है कि इसकी यूटिलिटी है इसलिए वी आर कंडीशन टू इट. दिस इज रॉन्ग. डज बिलीव इन द यूजफुलनेस. मटीरियलिस्टिक है द नेचर. आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू. आई थिंक दिस इज ओवर. आई होप आपको समझ आया होगा. आई एम सून गोइंग टू अपलोड PYQs 2023 and 2024 GSK solved. So please follow this channel, like, share and subscribe. Please, this is an important motivation to me. If subscribe and please, so I have some more motivation की upload करते आना. I am there with you guys to help you in any way possible. मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक एंड ईमेल आईडी दोनों चीज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इफ यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, वांट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, एनी आइडियाज, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, यू फील फ्री टू मेल मी. बाकी कोई भी इशू वगैरह है यू कैन आस्क. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. प्लीज वॉच द होल पार्ट. ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब. ऑलमोस्ट 70% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब. अराउंड 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब. Also hit the bell icon. Bell icon hit करने से you will get the notification on time. Very less time is left. Please prepare well. All the best.